Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about estimation. So let's start with that. Rounding numbers. So in our daily life we come across several situations involving the use of numbers. Sometimes we do not state the exact number as an answer to the questions which requires us to tell about how many. So instead we put forth numbers which is the nearest multiple of 10 or 100 or 1000 etc. This is known as rounding the numbers to the nearest 10 or 100 or 1000 etc. As the case may be, consider the following examples. Example number 1. Suppose there are 2487 students in a school. एक स्कूल में हमारे इतने बच्चे हैं. So if someone asks how many students are there in the school, we would say that there are about 2500 students in that schools. We have rounded 2487 to the nearest 100. कभी कभार ऐसे ही होता है ना, कोई हमसे पूछता है कि कितने हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, एग्जैक्ट ना बताते हुए उसको हम राउंड अप बताते हैं कि भाई इतना नंबर हमारे पास है. सो नाउ एग्जाम्पल 2. वी नो दैट द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया इज, हमें पता है पॉपुलेशंस की इंडिया कितनी है. सो फॉर नॉलेज सेक्स वन कुड से दैट पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया इज 93 करोड़. अभी हमारी कितनी है, 92 करोड़ समथिंग है. तो हम क्या कहेंगे, इसको एग्जैक्ट ना बताते हुए हम वी जस्ट से इट्स 93 करोड़. सो हेयर वी हैव राउंडेड टू द नियरेस्ट करोड़ बेटा. होप यू अंडरस्टूड. नाउ राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. Finding out the multiple of 10 which is nearest to the given number is called the rounding of the given number to the nearest 10. Let's learn how to round off a given number to the nearest 10. Consider the numbers 33, 37 and 35. First we consider 33. Clearly 33 lies between 30 and 40. 33 हमारे 30 और 40 के बीच में ही पड़ता है. सो ड्रॉ द नंबर लाइन एज शोन बिलो. हम इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो क्लियरली 33 इज नियरेस्ट टू 33. ये जो हमारा 33 है लाइक दिस वन, ये किसके पास है हमारा, इसके ज़्यादा पास में पड़ता है कि इसके पास में पड़ता है. सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज नियरेस्ट टू 30. सो हैंस 33 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 30 बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ सी द नेक्स्ट B part. Now we considered 37. अब हमारे पास 37 है. So clearly 37 lies between 30 and 40. Okay, ये 30 और 40 के बीच में लाई करता है. So draw the number line like that way. So ये हमारा 37 है. So ये किसके पास में है ज़्यादा? Yes, we can see that it's very closer to 40. Okay, so इसका राउंड ऑफ कितना हो गया, 40. Now see the number 35. सो 35 हमारा इस नंबर लाइन में एग्जैक्ट बीच में पड़ता है. ओके, सो जो नंबर हमारा एग्जैक्ट बीच में लाई होता है तो वो हमारा कंसिडर्ड क्या होता है, आगे की तरफ. तो हम कह सकते हैं कि इसका नियरेस्ट हमारा हो गया 40 बेटा. ये हम इसको इस तरफ से लेके मानेंगे. होप यू अंडरस्टूड. नाउ नोट दैट ईच नंबर 1, 31, 32, 33, 34 इज राउंडेड टू 30. And each one of 35, 36, 37, 38, 39 is rounded to 40 beta. Rounding a number to a smaller number is known as rounding down. Rounding a number to a greater number is called a rounding up beta. Hope you understood. Now working rule for rounding a number to the nearest 10. Step number 1. Examine the digits at one's place. Step number 2. If the digits at one's place is less than 5, then replace the one's digits by 0 and keep the other as they are. Step number 3, if the digits at one's place is 5 or greater than 5, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होती है, then increase the tens digits by 1 and replace the ones digits by 0. The following examples will make this idea more clear. Example number 3. So round off each of the following numbers to the nearest 10. Here it is given 314. So its ones digits is 4. इसके ones digits में 4 है.
विच इज़ लेस देन 5, ये 4 हमारा 5 से लेस है. सो रिप्लेस द वंस डिजिट्स बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर. सो राउंड ऑफ कितना हो गया इसका? येस 310 बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ बी पार्ट. Here it is given 527. So वंस की प्लेस में हमारा कितना गिवन है? 7, जो कि हमारा क्या है? 5 से बड़ा नंबर है. सो इन दैट केस इंक्रीज द 10 डिजिट्स बाय 1 एंड रिप्लेस द वंस डिजिट 0. सो वी कैन से दैट इसका राउंडिंग कितना निकल के आ गया? 530. होप यू अंडरस्टूड. नाउ सी पार्ट. नंबर गिवन है हमारा 1455 और इसकी वंस की डिजिट्स पे 5 है. तो हम क्या करेंगे? एक नंबर इंक्रीज करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 1460. सिमिलरली बेटा डी पार्ट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. Finding out the multiples of 100 which is nearest to the given number is called the rounding of the given numbers to the nearest hundreds. Let's consider the numbers 638, 683 and 650. So we shall learn how to round off these numbers to the nearest 100. First we considered 638. So 638 हमारा किसके बीच में लाई होता है? Yes, 600 and 700. So here it is a 630, okay, and this is 600, 638. So 638 ये जो हमारा नंबर है, we can say that इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 600. I hope you understood well. So now next 683. Clearly 683 lies between 600 and 700 like that way. So draw the number line. इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम. उसके बाद क्या करेंगे? Clearly 683 lies nearest to 700 than 600. सो इसका जो हमारा नियरेस्ट हो जाएगा ये बनेगा, यस बेटा, 700. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट बेटा we considered 683. So clearly 683 lies between 600 and 700. So draw the number line as shown below. So here it is 650, 660, 670 till 700 beta, like that one. So clearly 683 lies nearest to 700 than to 600. So we round off 683 to 700. Hence 683 rounded to the nearest 100 is 700 beta. Okay, hope you understood well. Similarly 650 हमारा किसके नियरेस्ट आएगा? 700 के नियरेस्ट आएगा. I hope you understood well. So now next, this is working rule for rounding a number to the nearest 100. Step number 1, examine the digits at tens place. Step number 2, if the digits at tens place is less than 5, replace each one of the tens and ones digits by 0 and keep the other digits as they are. Step number 3, if the digits at tens place is 5 और greater than 5, 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे हंड्रेड्स के डिजिट्स को बाय 1 एंड रिप्लेस ईच वन ऑफ द टेंस एंड वंस बाय 0 बेटा. The following examples will make the idea more clear. So example number 4. Round off each of the following numbers to the nearest 100. So here it is given 1545. So its tens digits is 4. इसकी tens की digits कितनी हमारी? 4 है. Which is less than 5, जो हमारी 5 से छोटी है. So replace each one of tens and ones digits by 0 and keep the other digits as they are. So इसका rounded कितना आया हमारा? Yes, 1500. Okay, I hope you understood. Now B part. The given number is 8472. So its tens digits is 7. So which is greater than 5? ये जो 5 से बड़ी है हमारी. So increase the hundreds digits by 1 and replace each one of the tens and ones digits by 0. So therefore rounded number कितना बन गया हमारा? Yes, 8500. Okay, so now see the next example. Think of rounding to the nearest 100. What numbers could be rounded to 1900? Solutions.
clearly all the numbers from 1850 to 1949 can be rounded to 1900 to the nearest hundreds. So in a similar process, we may round off the large numbers too. So see the next one, this is a rounding numbers to the nearest thousands. So rounding a number to the nearest thousands means finding out the multiple of 1000 which is nearest to the given number. So working rule for rounding a number to the nearest 1000. Step number 1, examine the digits at hundreds place. Thousands को clear करने के लिए हमें rounding करने के लिए we have to see the hundreds place. Step number 2, if the digits at 100 place is less than 5, replace each one of the digits at hundreds, tens and ones places by 0 and keep all the other digits as they are. बाकी numbers को हम 0 कर देंगे और आगे के number को हम जैसे हैं वैसे रखेंगे. Now step number 3, if the digits at 100 place is 5 or greater than 5, अगर 100 की प्लेस में 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होता है then increase the digits at 1000 place by 1 and replace each one of the digits at hundreds, tens and ones places by 0. The following examples will make the idea more clear beta. So see the next one. Example 6. Round of each of the following numbers to the nearest 1000. अब 1000 में करने के लिए solutions है. First one, the given number कितना है हमारे पास 8920. So its digits at 100 place. 100 की place पे क्या given है हमें 9 given है और 9 ये क्या है हमारा 5 से बड़ा है. So increase the digits at 1000. So 8 का हमारा क्या बन जाएगा 9 और बाकी जितने digits है उसके बन जाएंगे 0 0 0. That means जो rounded number है वो हमारा बन गया 9000. Now B part, given number हमारा कितना है 56257. Like that one, 100 की place में हमारा क्या given है 2 और 2 हमारा क्या है 5 से छोटा है. So हम क्या करेंगे 56 का 56 ही रहेगा हमारा यहाँ पर और बाकी हम लगा देंगे उसमें 3 0. So 56,000 is the rounded of that one beta. Hope you understood. Now texting time 6.1. Here it is given, round of each of the following numbers to the nearest 10. First one is 47. So 47 आपका जो rounding है किसके near पड़ता है 40 और 50. So we know that it's clearly very near to 50. So इसका जो rounding number बन गया ये बन गया 5050 बेटा. B part is 89. So 89 के very closer कौन सा number है yes 9090. So these are the other questions beta, you have to complete it your own. Okay, so now move on. Next, this is estimations. To estimate means to make a guess. Estimations thus gives us a rough idea of the answers to a questions involving operations on numbers. It's an excellent approach for students to use when calculations or checking the reasonableness of answers. So estimating sums first. A quick way to estimate the sum of number is to round off each of the given numbers to the nearest tens, hundreds, thousands and so on, and then add the rounded of numbers like first one. Estimate the sum, हमने इन दोनों को क्या करना है estimation करके इनका sums निकालना है nearest 10 and compare them then. So solution, ये हमारा estimated sum है 65 का राउंडेड हो गया 70, 81 का राउंड हो गया 80. सो ये कितना आया 150 और एक्चुअल सम निकला 146. सो द एस्टिमेटेड सम इज 150 एंड द एक्चुअल सम्स इज 146. सो वी सी दैट एस्टिमेट इज क्वाइट क्लोज टू द आंसर बेटा. Note that 146 rounds to 150 if we round off the actual sums. In most of the cases, the actual sums and the estimated sums are equal beta. Now just see the example number 2.
The number of cows in two farms are 168 and 314 respectively. Estimate the total number of cows in both the farms taken together. Solutions. We round off the numbers to the nearest 100 and add. So estimated sum कितना हो गया 200 और 100, that means 300, and actual sums कितना है 302, like that one. So thus the estimate difference कितना हो गया? Yes, दोनों को subtract करेंगे, so निकल गया हमारा आंसर 2 बेटा, इन दोनों का difference. So now estimating differences. Example number 1. Estimate the difference between 367 and 144 by rounding of them to the nearest tens. Then find the actual difference and compare them. So, solution. Estimated difference कितना है हमारा 230 और actual difference कितना है हमारा 223. So, that means दोनों का जो difference है वो कितने का निकला हमारा? Yes, the estimated difference is greater than the actual difference by 7. Hope you understood. So now example number 2. Here it is given, estimate the difference of 9,157 and 8,865. Then find the actual difference and compare them also. Estimated difference कितना हो गया हमारा? Like this one, 7 में से 5 माइनस करोगे then, and this is हमारा क्या हो गया 9200 नियरेस्ट 100 का, और 8900 हमारा हो गया नियरेस्ट 100 प्लेस का. So now next, the difference is about 300, the actual difference is like 292. The difference between the estimated and the actual difference is 8 beta. Hope you understood. What will happen if you round off the above numbers to the nearest hundreds? The estimated difference will become 0, which is incorrect beta. Now texting time 6.2. First one is estimate each sum by rounding of the numbers to the nearest tens. Then find the actual sums and also compare them. So, first one is given 7, 3, 4, 6. ये कितना बन गया हमारा 119. ओके, अब इसका हम एस्टिमेट करेंगे. 73 के क्लोज बन गया 70, 46 के वेरी नियरेस्ट बन गया हमारा 50. तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा बन गया इसका एस्टिमेटेड और ये हमारा बन गया एक्चुअल. नाउ अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना है इनका? यस, तो डिफरेंस ये हो गया हमारा बाय 1, क्योंकि 120 में से माइनस करेंगे 119. सो आंसर इज 1 बेटा. I hope you understood well. So these are the other examples. You have to complete it your own. Okay. Now estimating products and quotients. Example number 1. So estimate the product 6 into 120 by rounding of the bigger number to the nearest 100. Solutions. 120 rounds to 100, that means 100 into 6, that means 600. So the estimated product is कितना आ गया 600. And the actual product is 126 into 6 कितना होता है हमारा 720. The estimated product differs from the actual products by 120 beta. Okay, hope you understood. Now example 2. Estimate the product 46 and 75 by rounding of each number to the nearest 10 beta. Solutions. So 46 का राउंड कितना हो गया हमारा? Yes, 50. And 75 rounds to 75 का राउंड क्या हो गया? Yes, 80 beta. So write it 80 over here. So now multiply both the numbers. So 50 and 80 कितना हो गया हमारा? 8 5s are 45. So 4500. Okay. So the estimated product is 4500. Hope you understood well. So now example 3. Estimate the quotients 178 divided by 32 by rounding of each number to the nearest tens. So 178 का nearest कितना बन गया हमारा? Yes, it's a 180 and 32 का nearest क्या बन गया 30. So divide both the numbers and your quotient is 6 beta. So I hope you clear. Now similarly 4 example beta. Okay. So ये notes हैं हमारे.
Note that the smaller number is rounded up and the other rounded down. This gives us an estimated closer to the actual products, and we ignore the remainder while estimating the quotients. Hope you understood well. So now move on. Next beta. This is texting time 6.3. First one is estimate each of the following products by rounding off each numbers to the nearest 10. Here it is given 58 into 13. So let's start with that. अब हमने क्या करना है, इसका राउंडिंग ऑफ का प्रोडक्ट देखना है. सो 58 हमारे किसके क्लोज में है, 60 के, एंड 13 इज वेरी क्लोज टू yes 10. So that means the product of that one is 600. I hope you understood well. So these are the other questions beta. You have to complete it yourselves. Okay. So now move on things to remember. Division means equal sharing or equal grouping. Okay. Estimations means making a fair guess. It gives us a rough idea of the answer to a question involving quotients. To round a number to the nearest 10, we name the nearest multiple of 10. Rounding a number to a smaller number is known as a rounding down. Rounding a number to a greater number is known as rounding up beta. To round a number to the nearest 100, we name the nearest multiple of 100. And to round a number to the nearest thousands, we look at the digits at the hundreds place. I hope you understood all points very nicely beta. Okay. So with this we ended the chapter. I hope you understood well. So you only need to do practice beta. Do practice and do rest of these exercises by your own.